Delhi police have intensified their hunt for Jahangirpuri rioters. On Monday, shooter Sonu Sheikh was nabbed by the cops after an extensive hunt. Sonu's video firing from a gun had surfaced after Saturday violence. With Sonu, the total number of arrests are 25. Another arrest accused has reportedly confessed to supplying glass bottles to rioters to throw at the procession. Meanwhile, security has been beefed up in the area. Home Ministry has deployed 3 additional companies of CRPF. A total of 15 CRPF companies have been deployed. The Delhi police is grilling the accused Ansar and Islam and are also trying to find the motive behind shooter Sonu Sheikh's actions and who are the ones who gave guns to them. Meanwhile, Union Home Minister Amit Shah spoke to the Delhi police about the violence. The minister has asked the police to take action and set a precedent. The Home Minister has been monitoring Jahangirpuri situation and even spoken to Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana as well as Special Commissioner of Police Law and Order Dipendra Pathak. दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। जो बीजेपी है ये पुलिस उसके अंडर में आती है। बीजेपी को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से लागू करना चाहिए, उनको दंगों को रोकना चाहिए। दंगे करवाने वाले खुद हैं और दंगों के बारे में बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए। जो भी आरोपी उनको ना 10 गुना सजा दो। बीजेपी वाले हों, किसी भी पार्टी के हों, 10 गुना सजा मिलनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है जो एक क्रोनोलॉजी के तहत काम कर रही है और उनका मेन मतलब ये है कि देश में कैसे भी अशांति रहे। इसलिए जब अवसर मिलता है भ्रम फैलाने का, भ्रम के माध्यम से भय फैलाने का, वो इस तरह का काम करते हैं। जहांगीरपुरी में अगर वो प्रोसेशन निकल रहा था, उसके साथ पुलिस क्यों नहीं थी? वो मस्जिद जहाँ पे ये वाक़या हुआ, उस मस्जिद के चारों तरफ पुलिस क्यों नहीं थी? क्या ऐसा नहीं है कि प्रशासन ही चाहता था कि ऐसा हो? अगर प्रशासन चाहता तो ऐसा वाक़या नहीं हो सकता था। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली या उसके कुछ एक आध कार्यकर्ताओं को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। हम लीगल बैटल या कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को या विश्व हिंदू परिषद को झूठे किसी केस में फंसाया गया तो। हनुमान जी की जन्मोत्सव की शोभा यात्रा हर साल निकलती है, कोई आज नहीं निकली है, पहली बार। हर साल हम लोग निकालते हैं। हर कानूनन जो भी हमारी मतलब उसमें रहती है परमिशन वगैरह सब लेकर हमने 3 थानों से परमिशन लेकर के हमने उस यात्रा को निकालने की परमिशन ली। पुलिस ने हमें परमिशन भी दी लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई। हमारा यही मानना है कि जिस हिसाब से हम लोग इतने सालों से वहाँ पर हम लोग यात्रा निकालते आए हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई उसमें शरारती तत्व जरूर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है और कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसमें आगे भी ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, इस पर रोकथाम होनी चाहिए। देखिए, टोटल अगर आज तक की गिरफ्तारी की बात कहें तो 24 हुई है, जिसमें 24 में 2 एप्रीहेंशन है जो 2 जुवेनाइल्स हैं और बाकी जो 22 हैं जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें जो भी आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जितने लोग रिवॉल्वर या कुछ उस तरह की चीजें लेकर सामने दिखे हैं, उन सब की गिरफ्तारियां हो गई हैं। 2-3 और बचे हुए जिस पर हम काम कर रहे हैं। Shreya Chatterjee is now joining us live. Shreya, yes, the Delhi police is conducting a thorough investigation, but they're also in the dock. They're also in the dock because there have been allegations that the investigation has been one-sided. What are we picking up on the front where there was the procession that took out, that was taken out by a certain group where they were brandishing weapons in the air, and what is the action that they've taken against those perpetrators too? Well, Jyoti, we're not getting a very clear answer on that. However, if I can tell you that there is a summation of the details that Delhi police is putting forward before us in the public domain, where they say that 24 people have been arrested. The people who are seen with weapons have been nabbed, and there are further few more who's been cluing in on. So that's in summation of the update that Delhi police has put forward before us. But the question that you very particularly asked about the ones in the Shobha Yatra who were seen brandishing
carrying weapons. Have they been arrested? We haven't yet got a clear answer. But now the Delhi police has initiated an FIR under sections 188 against the organizers for not having a proper permission. Maybe we can see some action by the Delhi police on the very, yatra as well, which basically did not have a proper permission, because this is also a big question on the front of Delhi police, whether this wasn't an intelligence failure or not. If there was a yatra which had no permission, why was that allowed in the first place? Because at the end of the day, it was in this very yatra that clash erupted at this very spot in Jahangirpuri's Kushal Chowk, where I'm currently standing. What about the fact that there has been a letter petition submitted to the Chief Justice of India in this regard as well, in terms of the Delhi police being accused of being partial and communal? What does the petition really say, Shreya? Well, Chaiti, as you pointed out, it's about the fact that there has been a one-sided investigation conducted by the Delhi police, and there has been a targeted attempt by the Delhi police on one particular community. The Delhi police also has given a clear answer that it's not the fact, because they say that arrests in the matter, in the 24 who's been arrested, there are people from both the sides, people from both the community has been picked up. Further investigation will only clarify that whether or not this is a fair investigation or not. But as you rightly pointed out, the matter has now reached the court. Well, probably we will see some more updates coming in, and the Delhi police's investigation will also be scrutinized so far as the Jahangirpuri clashes are concerned. But I also want to just give our viewers a short update that there are questioning going on, especially about Ansar and Sonu. Sonu is also to be produced before the court today. Delhi police would want to seek a remand of at least 5 days, so they are questioning him as well. What we also do know that the one who had actually procured the weapons and given the weapons to these people is yet to be nabbed, so there's a lookout for that person. So we'll see a few more arrests in the case likely. But as you pointed out about the investigation of Delhi police, whether it's biased or not, clearly that's now going to also be scrutinized in the court. Oh yes, absolutely. Thanks, Shreya, for that all-encompassing update right there. The Delhi police clearly once again on the dock, as Shreya was also mentioning, for the Delhi riots probe. They have been accused of being partial and being communal in a letter petition that has been submitted to the Chief Justice of India. The cops, for the time being, are determined to continue with the probe of Saturday evening clashes in detail and determined manner. Take a look. On Monday, the Delhi police registered a case against the organizers for carrying out a procession without permission on Saturday, the 16th of April. One of the leaders of the VHP, Prem Sharma, has reportedly been arrested. देखिए, टोटल अगर आज तक की गिरफ्तारी की बात कहें तो 24 हुई है, जिसमें 24 में 2 एप्रीहेंशन है, जो 2 जुवेनाइल्स हैं, और बाकी जो 22 हैं जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें जो भी आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जितने लोग रिवॉल्वर या कुछ उस तरह की चीजें लेकर सामने दिखे हैं, उन सब की गिरफ्तारियां हो गई हैं. 2-3 और बचे हुए जिस पर हम काम कर रहे हैं. The Delhi police are investigating a larger conspiracy angle in the Saturday Jahangirpuri riot case. 2 prime suspects, Ansar and Aslam, were produced in court and were sent to police custody. The Delhi police, meanwhile, has been accused of being partial in their investigation by a petition made by a lawyer in court. The letter petition moved before the Chief Justice of India, N.V. Ramana, to take up suo motu cognizance of the riots and alleged that the Delhi police investigation so far had been partial, communal and directly shielding perpetrators of the riots. ये बिल्कुल गलत बात है. हमने जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं. जिन लोगों ने वहाँ पे उद्दंड किया या कायदा अपने हाथ में लिया, वो किसी भी पक्ष के नहीं हो. हम तो उनको जो आरोपी के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई आगे करते हैं. Delhi police went to Jahangirpuri on Monday for further investigation. One of the prime suspects, as per the crime branch investigation, Sonu, who shot from a pistol, has since been arrested. Sonu was caught on camera firing from a pistol at a crowd. The Delhi police apprehended his wife on Monday. हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा तो वो रोजा खुलने का टाइम हो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया, तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा. ऐसे धमकी दे रहा. जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा बंदूक चलाया.
Riots broke out on the eve of Ram Navami and Hanuman Jayanti on the 16th of April. The Delhi Police Crime Branch took over the investigation. More than 20 people have been arrested, including 2 juveniles. 10 teams of sleuths are scanning through more than 200 videos of the clashes and all evidence collected so far. The northeastern part of Delhi had last witnessed a major riot in March 2020. Bureau Report, India Today. And if you're wondering how the Jahangirpuri riots began, we at India Today have conducted a detailed investigation on how the Jahangirpuri violence even began in the first place. Our next report gets you the complete details. Take a look. Delhi's worst communal violence in 2 years. Clashes during a Hanuman Jayanti procession in the national capital. As police swing into action, conduct searches and make arrests. India Today carried out a discreet probe on hidden camera. We captured candid revelations about how it might have started at Jahangirpuri on Saturday. This is Raja, a resident of the riot-hit neighborhood. Unaware, he is being filmed. Raja gave his own account of how rioting unfolded at Jahangirpuri on Saturday. वीडियो बना रहे सब सारे मुसलमान सब फोटोग्राफर दिया हमने बात आएगा नहीं आप लोगों ने पहले पानी वानी भी पिलाया हाँ सब कुछ किया गले मिलाया हम लोगों ने उनसे हाथ मिलाया एकदम बाइज्जत हमको हमने उनको जाने दिया फिर क्या दिक्कत नहीं फिर ये लोग कुछ ज़्यादा लोग में तादाद हो गए थे कि और यहीं बजाएंगे हम और यहीं उतरेंगे फिर देखो बाकी पेट्रोल लगाया और ये झंडा वंडा भगवा झंडा फहराने की कोशिश की थी ऊपर हाँ भगवा झंडा फहराने की कोशिश की हाँ कोशिश की थी बस फिर आपस में हो गया फिर पता नहीं कौन लोग थे क्या करके क्या करते हर साल जाती है इनकी रैली हर साल कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ इस बार 4-5 दिन माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम यहाँ हो आज क्या हुआ ये लोग अचानक से आए जब यहाँ बजाने लगे कुछ लोगों ने मना किया था तो फिर हम ये डीजे बजाएंगे तो मारने लगे धक्का बुक्की करने लगे अगर आपको कोई धक्का मारेगा आप वैसे खड़े रहोगे तो आप भी धक्का ही मारोगे तो धक्का बुक्की हुआ कुछ लोग यहाँ से भी आ गए तो ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया तो भगदड़ हो गया तो पुलिस आ गई उससे पहले पुलिस नहीं थी रैली में पुलिस नहीं थी एक भी पुलिस नहीं थी ये रैली में एक भी पुलिस आप नहीं देख पाओगे इसमें रैली में ये लोग तो डंडे और ये डंडे नहीं चाकू तलवार डंडे का ही होगा बाकी सब चाकू तलवार और वो साउथ के फिल्म में जैसा हथियार दिखा रहे हैं ना वही Raja shared the video he said he had himself filmed during Saturday's procession. Slogan shouting marchers carrying unsheathed swords and other sharp-edged weapons could be seen in the footage. And our reporter captured this on his camera. Flags lying scattered at the mosque gate and around. This is Karan, a participant in Saturday's Hanuman Jayanti procession at Jahangirpuri. And this is what he admitted. जैसे मस्जिद के पास में अगर रुक भी गए ब्रेक ले लिए अगर जय श्री राम के नारे लग गए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक की भी पत्थर फेंकने का मतलब क्या बनता है बैठ जाओ नहीं बैठो सर बैठ जाओ सब प्रॉब्लम क्या होती है इस चीज़ से उसके बाद में पत्थर मारने के बाद में भारी तकाज से इधर से भी और उधर से भी पत्थर चल रहे हैं पत्थर चलने के बाद में सी ब्लॉक से और मस्जिद की साइड से ही पत्थर चल रहे हैं पत्थर चलने के बाद में जितने पब्लिक के सारे हो गए ये सब 4 से 5 लोग लेकर चले गए बोतल पत्थर सर पेट्रोल भी फेंका है पेट्रोल वाली उनमें भी आग लगाई है इनसे भी ये तो सर पहले से ही प्लानिंग थी हमारा तो नहीं हमारे ठीक ठाक हाँ हम ही थे क्या हुआ था क्या बताओ सबको देख ही रहे हो सुन ही रहे हो अचानक मस्जिद से पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया मस्जिद से 2 घर छोड़ते ही पत्थर आ रहे हैं
ठीक, और बोतलें आ रही है, ठीक, एकदम से अपनी पब्लिक आकर के ऑब्जेक्शन उठाती है। अगर मस्जिद के सामने अगर नारे लग भी गए जय श्री राम के, तो क्या बुराई होगी? मेरे को एक ये बता दे कि अल्लाह नाराज हो गए, उनके कानों में दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही, तो बताओ, ऑब्जेक्शन उठाओ ना तुम इस चीज़ का। तुम्हारे तरफ से पथराव हुआ सर, हम क्यों नहीं करेंगे? जब हमारे पे कोई करेगा, हम गांधी जी के वक्त तो है नहीं, क्योंकि एक मारो दूसरा काल आगे कर दो। शोभा यात्रा यहाँ से निकली, यू राउंड फिगर हुई, यू राउंड होने के बाद में इस रोड को छोड़कर अगला रोड है सी और बी का, वहाँ से निकली, टर्न होते के साथ ही यहाँ आई, मस्जिद के पास में रुकी हुई, 2 सेकंड की रुकी, जय श्री राम के नारे लगे, ऊपर से पथराव चालू। जाते समय इन्होंने पानी भी पिलाया। अच्छा, हाँ, जाते समय पानी पिलाया। A riot that scarred the national capital yet again. Yet another desecration of constitutional values in the name of religion. A report by Nitin Jain and Mohammad Hizbullah for India Today's Special Investigation Team. The last 15 days have witnessed stone pelting, arson and unprecedented violence. It started on 2nd April in Karoli, Rajasthan, where a procession celebrating the Hindu New Year was allegedly pelted with stones. Next came Ram Navami and Hanuman Jayanti processions. Similar allegations of stone pelting, similar aftermath of violence and arson. Is there a pattern really to these communal clashes? Who really wants to disrupt peace in India? Take a look. Violence, stone pelting and arson. Across states, unrest and disturbance in the last 15 days. Clashes reported during Hindu religious processions. It started on April the 2nd in Karoli after stones were allegedly pelted at a rally on the occasion of the Hindu New Year. Over 42 people were injured. 8 days later, on Ram Navami, violence erupted in Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand and Bengal. Processions were allegedly pelted with stones, resulting in clashes between two religious communities. The situation rapidly spiraled out of control. Local shops and vehicles were torched. In Madhya Pradesh, fingers were pointed at the radical Islamist outfit, the Popular Front of India. जिन लोगों ने शांतिपूर्वक रामनवमी के पर्व पर उस जुलूस पर पथराव किया, बहन बेटियों पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लोगों ने आगजनी की योजनाबद्ध तरीके से, तो क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस इनका समर्थन करती है? The same evening, two groups of students clashed at the Jawaharlal Nehru University in Delhi, allegedly over serving non-vegetarian food in the hostel on Ram Navami. On the 16th of April, communal clashes broke out during a Hanuman Jayanti procession in northwest Delhi. Swords, pistols were brandished, stones were pelted as the rally neared a mosque. जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे उद्दंड किया या कायदा अपने हाथ में लिया, वो किसी भी पक्ष के नहीं हो, हम तो उनको जो आरोपी के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई आगे करते हैं। Hanuman Jayanti clashes were also reported from Hubli in Karnataka, Kurnool in Andhra Pradesh and Haridwar in Uttarakhand. The question is there a pattern to all of these clashes? How are rioters prepared with all these weapons? Are stones collected and hoarded? Is a flare-up always pre-planned? And how is it that they're happening all over the country? Is there a deliberate attempt to provoke? What's the intent? What's the objective? And why is India being divided? Bureau Report, India Today. My colleague Shiv Arur now walks you through the recent incidents of communal tensions that occurred across the length and breadth of India. Take a look. Well, we don't know if these are isolated incidents. That's the question we're asking. But just take a look at how many places these incidents have been happening in. It all started in Karoli in Rajasthan a few days ago, earlier this month, when the Hindu New Year procession was allegedly targeted there.
That's where it started. There was a great deal of attention paid there. Then you saw what happened in Khargon in Madhya Pradesh, where a Ram Navami procession was also pelted with stones that flared up to a large extent. A person, many people were grievously injured. Then you saw a Ram Navami rally that was targeted in Gujarat. That also became a pretty violent incident. From Gujarat, it appeared to spread. We don't know if these are all connected, but stones were pelted at a Ram Navami procession in Jharkhand. In at least 2 places in Jharkhand, you saw stone pelting taking place in Jharkhand. You also saw clashes during Ram Navami processions in West Bengal. That became the 5th state where pelting took place during a Ram Navami procession. Then there were clashes on Ram Navami finally in the national capital of Delhi. This was on the Jawaharlal Nehru University campus as well. This was over meat being served in the hostels during Ram Navami. So the number of incidents, we've just picked out just the most prominent ones, and it really shows you how it's happened in different parts of the country. It's not isolated to just one area. Of course, if you look at other parts of the country, there have been incidents of hijab and halal and azan. Those are in other parts of the country, but we've picked out just only the violent incidents that have taken place. The use of loudspeakers by mosques is once again mired in controversy in Maharashtra. Uddhav Thackeray's government is working hard with the police in different communities to maintain peace in the state. Here is a report from Maharashtra. The call of the muezzins to the faithful is under the scanner. The Maharashtra government, along with the minority community, is battling tough to allow azan and use of loudspeakers by mosques with permissible limits. इसके बारे में राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर ये दोनों मिलकर बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी और उसी के तहत सबको इसकी अमलबजावनी करना है। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन या ये तनाव पैदा करने की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम ध्यान रखे हुए हैं। The Maharashtra government plans to make it mandatory for religious sites to seek permission for the use of loudspeakers. Nashik police has already issued an order making it mandatory to take permission for loudspeakers. Maharashtra DGP has been directed to hold a review meeting with district administrations for implementing the order. जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और अन्य धार्मिक स्थल, उन सारे जगहों को 3 मई 2022 पर्यंत पुलिस आयुक्त की परमिशन लेनी होगी और इसके लिए जो साइलेंस जोन और रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन और इंडस्ट्रियल जोन है, उसके अंतर्गत डे टाइम और नाइट टाइम में जो नॉइज लेवल परमिसिबल है उसके हिसाब से उनको हर एक धार्मिक स्थल को जो परमिशन दिया जाएगा उनके मेरिट्स पर लाउड स्पीकर के लिए, तो साथ ही साथ वो कितने डेसिबल तक का आवाज उससे निकाल सकते हैं इसकी भी उसमें मर्यादा निश्चित की जाएगी। The Supreme Court directed rules for the permissible limit of noise is going to be the backbone for Maharashtra government's directions in this regard. The Apex Court directives allow 65 decibels during the day and 55 decibels in the night in commercial zone. For residential area, 55 decibels in the day and 45 decibels in the night is acceptable. But for the silence zone, the limit in the day period can't cross 50 decibels, while for the night, the maximum limit is 40 decibels. The Apex Court has also limited the use of loudspeakers from 6 in the morning till 10 in the night. 2 जमातें कर दी हैं, जुमे की भी 2 जमातें कर दी हैं और ईद की भी 3 जमातें कर दी हैं और बाहर की जो माइक पर जो नमाज चलती थी वो इस साल से हम उसको बंद कर देंगे ताकि 3 जमातें लोग इत्मीनान से आकर के मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़े। Members of Aman Committee in Mumbai city are urging ulemas to keep the audio level down
within permissible limits. हमारी जो बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें सीपी साहब को कहीं कुछ जगह से कंप्लेंट्स आई थी, कुछ इलाका उन्होंने उनको कॉन्टेक्ट किया था, तो हम वहाँ के लोगों को, वहाँ की कमेटियों को यहाँ बुलाया, ट्रस्टियों को यहाँ बुलाया था सेकंड थर्ड डे, तो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर कमती कर दिया था। हमने कहा हम खुद चेक करेंगे, तो उन्होंने रात में जाके हमने चेक भी किया, उस वॉल्यूम को हमने फिर अपने उसमें मोबाइल में लिया भी। हमारे भाइयों को, किसी भी गैर मुस्लिम भाई को तकलीफ होगी हम वहाँ स्लो नहीं करें, हम बंद भी करवाएंगे। The row over loudspeaker use escalated in the state after the Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray raised the pitch, calling on Hindu brothers to be prepared if loudspeakers are not removed from mosques by 3rd May. With controversy around loudspeakers outside mosques and noise pollution, members of the Muslim community are also taking some efforts like reducing the volume of loudspeakers for azan to the permissible level given by the Supreme Court. And there are many other measures which are being also taken, like offering of namaz on the road is something which the community is looking forward to avoid. With camera person Raju Revankar, Mustafa Sheikh for India Today.